This conference will now be recorded. إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لك سجودي وطاعتي شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله या अली मदद अजीज सर सुभान अल्लाह, या अली मदद, या अली मदद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार तस्वीर। शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों को। या अली मदद, या अली मदद। हम आज कंटिन्यू करेंगे मौलाना हाजिर इमाम के बैतुल ख्याल के फरामीन, और उसमें से एक फरमान जो हम पढ़ रहे थे, टोरंटो कनाडा, अगस्त 18, 1992 का। Inshallah, we will continue to read this Farman today and we will try to finish that today. Let's start with Imam's Mubarak name, Nur Maulana Shah Kareem Al Hussaini Hazir Imam, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Ya Maulay Mehrban, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Alayul Qayyum Ali Allah Madad Farma, Alayul Qayyum Ali Allah Madad Farma, Alayul Qayyum Ali Allah Madad Farma। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला, या मौला, मदद मौला, मदद मौला। या मौला, हमारे करीब आ जाए मौला। या मौलाए मेहरबान, अपना मुबारक शफीक हाथ हम गरीबों पर रख मौला। अपने नूर की रोशनी हमारी तरफ डाल मौला। या मौलाए मेहरबान, हमारे साथ खड़े रहना मौला, ताकि हम
तेरे फरामीन को हो पढ़कर समझ सके मौला। या मौला मेहरबान, तेरी मदद की जरूरत है मौला। या मौला मेहरबान, तेरी मदद की जरूरत है मौला। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। टोरंटो कनाडा, बैतुल ख्याल फरमान, August 18, 1992. I would like to read this first paragraph or just 4 lines of it, and then we will go to where we had left off last week. Mullah says, now in the practice of Islam, इस्लाम के अंदर जो हमारी प्रैक्टिस है, those who wish to make an effort for individual enlightenment, और आप में से जो जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर अपनी रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, are given opportunity to do so in our तरीका, वो हमारे तरीके के अंदर कर सकते हैं। किस तरह से? थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ बंदगी, बंदगी के साथ वो ये काम कर सकते हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ द सोल, और ये रूह का मामला है। और यहाँ पर वही सवाल जो हमने पिछले हफ्ते सामने रखा था कि क्यों इस्लाम के अंदर ये अपॉर्चुनिटी, व्हाई इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम दिस अपॉर्चुनिटी इज विथ आवर तरीका। एंड मुल्ला सेज it is through the practice of bandagi, and bandagi is done with isme azam, and isme azam cannot be given by anyone other than the imam zaman, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो हमारा तरीका है उसके अंदर ये प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इबादत बंदगी इसमें आजम के बगैर नहीं होती, और इसमें आजम इमाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इमाम ही से सिर्फ मिलता है। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि हमारे तरीके के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है। सो आपके एक सवाल का जवाब यहाँ पर मौजूद था जो आपने एट द वेरी एंड लास्ट वीक पूछा था। सो लेट्स गो टू वेयर वी हैड लेफ्ट इट ऑफ। The ball that I will give you is, and then Mullah gave the ball, whatever that ball was, and it means he who is above all else, above the physical world, above time, above human mind. यहाँ पर इसको पहले समझने की जरूरत है। Let's try to think what Imam is giving us and what is it that he is giving us. Most of you would remember that when Imam gives Isme Azam, along with the Isme Azam, he gives us his blessing, Khana Vadan, and Noor. आपको याद होगा कि जब इमाम इसमें आजम इनायत करते हैं तो उसी के साथ
उनकी दुआ आशीष, खाना वदान और नूर शामिल करके इनायत करते हैं। अब आ जाए इस लाइन के ऊपर कि ये जो मैं बोल दे रहा हूं आपको, the bowl that I am giving you today, it means he who is above all else. ये क्या है? ये वो है जो सबसे ऊपर है, above all else, whatever you can imagine, आप जो भी सोच सकते हैं उससे बढ़कर है ये। Whatever you can imagine, whatever you can comprehend, whatever you can understand, Nur to be, इसमें आजम to be, this is above all else. वो सबसे ज्यादा बुलंद है। क्यों? कि वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से। It is above all else because it is above our comprehension. And look at what Mullah says. It's above the physical world. Nur is given and can be achieved in this physical world. But Nur itself and the understanding of the Nur is behind our comprehension, and therefore only person who will be able to understand is the one who has been blessed by this Nur, because this is above our physical world. हमारी जो ये दुनिया है, ज़ाहिरी दुनिया है, ये उससे बुलंदी की कोई चीज है। इसी वजह से सिर्फ वही आदमी समझ सकता है इसको कि जिसको ये नूर की इनायत हुई है, बाकी कोई नहीं समझ सकेगा। अबाउट टाइम, और ये वक्त से भी ऊपर है। अब इसको दोनों को साथ में ले लें, दुनिया से भी ऊपर और वक्त से भी ऊपर। लेट्स टेक बोथ ऑफ देम कंबाइनली, above the physical world and above the time. इसको कहते हैं दहर। कौन और मकान से बुलंद, is called दहर। Timelessness and spacelessness. So what Imam just told us, a secret. And what was the secret Imam just gave us? That you will find this Noor when you raise yourself, when you rise above the time and space. How do you raise yourself above time and space? मौला ने अभी अभी आपको एक राज की बात बताई। क्या आप इस नूर को सिर्फ उस वक्त पा सकेंगे जब आप अपने आप को दहर के मकाम पर ले जाएंगे, वक्त और जगह से बुलंद। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डू वी गेट टू द लेवल? हाउ डू वी गेट टू द लेवल? कैसा पहुंचे हम दहर के अंदर? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दहर, timelessness and spaceless is not outside of you. वो आपसे बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। The world within yourself, in your personal world, आपके अंदर की जो आलम शख्सी है, आपका जो बातिन है, वो मकाम है जहां पर वक्त और जगह का कैद नहीं है।
In other words, this cannot be found outside in the physical world, but inside in your batin, Betul Khayal. Imam have opened the secrets to finding this Nur. And Imam have said, seek this Nur, search for this Nur. If this Nur was out of our hand, out of our reach, out of our capacity, how would we seek and search and find? Imam uses the wisdomful words. इमाम जो है वो इतने अच्छी तरीके से वाइजली हमें समझाते हैं कि देखो ये नूर आपसे दूर नहीं है, आपको पता नहीं है मैंने आपको ये नूर दे दिया है. Only thing now you have to do is seek that नूर, उसको ढूंढे और वो आपके अंदर ही है. And that आलम शख्सी where this timelessness, spacelessness exist. About the human mind, आप उसको का विचार नहीं कर सकेंगे. Symbolically, the bowl says, seek the light of Hazrat Ali to come to you. एक इसकी मिसाल ये है. बोल क्या है? Listen to this very carefully. बोल क्या है? What is bowl? What is bowl is telling you? Bowl is telling you to seek the Nur of Ali. And who is the Ali? And who is the Ali Zaman? Seek the Nur of Imam. Who is the Imam? Imam is the Nure Mujassam. Nure Mujassam, embodied Nur. Nure Ilahi in the body of the Imam. थोड़े मुश्किल अल्फाज है. इमाम वो नूर है जो खुदावन ताला ने पहले ही दिन से इमाम के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी जमाना हो. Any time, any age, any era, any cycle, regardless, Imam has kept his Nur in the Imams of the times, regardless of what time it is. In other words, this bowl says, आपको बोल क्या बोल रहा है? Seek, ढूंढे, light of Hazrat Ali to come to you. Each one of you individually. Very important. This light is omnipresent. It can be yours and mine at the same time. It's not that if Imam gives you the light, the Nur, then he will be out of Nur and there will be a shortage of Nur. ऐसा नहीं है कि इमाम ने एक को नूर दे दिया तो अब वो थोड़ा कम हो गया, उसके अंदर कोई शॉर्टेज आ गई और अब और किसी को नहीं दे सकता है. वो इमाम का नूर ओमनी प्रेजेंट है, हर एक के अंदर इंडिविजुअली वो नूर
इत्मीनान किया हुआ है पहले से ही. Only thing you have to do is go into your batin, call now secret. बहुत ही जरूरी है कि हम इन बातों को समझें. And I will use an example so you may understand. मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाऊंगा. उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे. अगर नहीं, आप जरूर आखिर में पूछ लें कि क्या मतलब है इसका. और देखिए क्या मौला फरमाते हैं कि जो मैंने बोल दिया ना आपको, वो बोल जो है वो पुकारने के लिए है, बुलाने के लिए है. The bowl that I am giving you, the bowl says seek. तो जब आप बोल बोलते हैं ना अपना, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप उस नूर को कॉल कर रहे हैं. जिस तरह से आपके बच्चे को आप बुलाते हैं कि बेटा इधर आ, यहां उसका जो भी नाम है आप उसको पुकारते हैं. आपके अंदर जो नूर है उसका एक नाम है, और वो नाम क्या है, आपका इस्मे आजम है. आपका इस्मे आजम उसका नाम है. जब आप उसका नाम पुकारते हैं तो वो आपकी तरफ तवज्जो देता है, क्योंकि आपने बुलाया ना उसको. लेकिन अगर आप उसको सीख नहीं करते, आप उसको बुलाते नहीं है, so now when you sit in bandagi, think like this. What we are learning today is very, very important. Call upon your Noor, call upon the Noor Ali, call upon the Noor Imamat. वो आपके अंदर ही है, दूर नहीं है, बाहर नहीं है. आप उसको पुकारे अपने इसमें आजम के साथ, इस विचार के साथ कि जब मैं अपने नूर को बुलाऊंगा तो उसका नाम क्या है, जो भी आपका बोल है वो उसका नाम है. आप उसको पुकारें. जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी तरफ तवज्जो देगा. जब हम अपने इसमें आजम को नहीं समझते हैं, हम उसको नहीं पुकारते हैं, तो वो आपके अंदर ही रहता है लेकिन कभी भी उजागर नहीं होता है. कॉल अपॉन हिम, सीक. आप उसको ढूंढे, वो आपके अंदर ही है, कहीं दूर नहीं है. ओके, लेट्स कम बैक टू इट. Each one of you individually, through the concentration on the bowl, do not repeat this bowl to others. क्योंकि ये आपके और आपके इमाम के दरमियान में है. ये आपके नूर का नाम है जो इमाम ने आपको दिया है, जो नूर दिया है और जो इसमें आजम दिया है. Don't disclose this to others. Sometimes people will trick you. They will come to you and says, I think your Isme Azam is so and so. Don't make any faces. Don't say anything. Just walk away. Or you can say, this is not the matter which I can discuss with you. Walk away. Don't get tricked by it. लोग आपको ट्रिक करेंगे. कभी भी अपना इसमें आजम किसी के साथ डिस्कस ना करें, ना करें. This is a matter between each murid here and the imam of the time. ये आपके और आपके मौला के बीच में है बस. It does not concern anyone else. It's between you individually and your imam. ये आपके और आपके मौला के दरमियान में जाती है, पर्सनल है.
It is I who am giving you this bowl and keep it to yourself. बिल्कुल सिंपल है कि मौला फरमाते हैं ये इमाम है जो आपको ये बोल देता है, आप इसको अपने पास रखें. It is I who am entrusting this bowl to you. मुल्ला ने ये बोल आपके ऊपर भरोसा करके अमानत के तौर पे दिया हुआ है. क्या कहा? मुल्ला ने आप पर भरोसा करते हुए he have entrusted this bowl to you. वो आपको अमानत के तौर पर दिया हुआ है. And I hope that you will find that light. और मौला फरमाते हैं कि इस बोल के साथ उम्मीद है, दुआ है, खाना वदान है, इमाम की विश है कि आप उस नूर को पा लेंगे जो मैंने इस बोल के अंदर डालकर आपको दिया हुआ है. Further, Mola says, I hope in due course that I will be able in the years ahead to give you another bowl. In one place in Karachi, back in 2000, in Bethul Khiyal, Mola says that when I come back next time, and if you come back, I will give you another bowl. And then Mola goes one step further. And yet, when I come back again, and if you come back again, I will give you another bowl. दो मर्तबा कि मैंने आज आपको बोल दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा और अगर आप आएंगे तो मैं आपको एक और बोल दूंगा. फिर मौला वहां स्टॉप नहीं करते हैं, एक और स्टेप आगे जाते हैं, और इसके बाद जब मैं आऊंगा और अगर आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपको एक और बोल दूंगा. This is also very important to understand because Mola wants to give you the bowl, he wants you to succeed in the bowl. If you cannot succeed with the first one, he will give you the second one, third one, because he wants you to be successful. Mola आपको कामयाब देखना चाहता है. वो आपको एक नहीं, दो नहीं, जितनी मर्तबा आप बोलेंगे, आपकी ख्वाहिश होगी इबादत में सक्सेसफुल होने की, वो आपको बोल देगा. इज नॉट स्टिंजी. वहां पर कंजूसी नहीं है कि एक मर्तबा मैंने बोल दे दिया तो बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं है. He wants you to be successful, so he will do whatever it takes for you to be successful. But question is not what Imam wants to give you. Question is, do you want what is Imam offering to you? Because Imam, he wants to give you everything. Question is, do we want it to take that blessing of the bowl and Isme Azam? Because we are hesitant sometimes. कभी कभार हम किसी वजह से भी अपने दिल को बंद कर लेते हैं और अपने दिल को खोलते नहीं हैं. इमाम जो दे रहे हैं उसको लेते नहीं है. जब हम इमाम की ब्लेसिंग को नहीं लेते हैं तो हम अपने हाथों से ही अपने दिल को बंद करके बोलते हैं, मौला मुझे तेरा नूर, तेरा इस्मे आजम, तेरी दुआएं, तेरी शफकत, तेरे खाना वदान नहीं चाहिए. Why would we do that when Imam is so blessed and merciful? He's Rahman and Rahim. He wants to give you that. Why would we not want to take it? I would say every time Imam, if Imam comes every year, Inshallah, Ameen,
And if he wants to give the bowl every year, go take it. Because we are there for Imam's blessing, Imam's Khanavadan, Imam's nearness. If Imam wants to give you that, who would be a murid who will say, oh no, thank you, Mala Bapa. I already have your Khanavadan once. No, we are looking for Khanavadan every single day. हम तो रोजाना ही खानावदान के लिए तरसते हैं, दुआ आशीष के लिए तरसते हैं, इमाम के दीदार के लिए तरसते हैं, इमाम की नजर के लिए तरसते हैं. Then why would we not do that? Why? Let's read this. I hope in due course that I will be able in the years ahead to give you another bowl once you have been successful here, and I will be most happy if you are successful. I will be most happy if you are successful. Practice bandagi regularly. If it is difficult, remember it is difficult for everybody. Now this line, very important. और हम हमेशा सुनते हैं ना कि बंदगी बहुत डिफिकल्ट है. We hear this all the time कि बंदगी बहुत ही डिफिकल्ट है. That is true. लेकिन याद रखें ये सबके लिए डिफिकल्ट है. तो फिर हमारे दाइयों पीरों ने किस तरह से और हमारे आरिफों ने हमारे भगतों ने किस तरह से इसको कंप्लीट किया. भाई वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे. How those who do the deen, the dais, peers, arifin, bhagats, sages, how did they complete this Isme Azam and how did they become successful? Because if it's hard, then it's hard for everyone. Why are we think that we are special and it should not be hard for me? बंदगी की जो कमिटमेंट है, we ourselves chose to go to the Imam. And then when we went there, Imam asked us once again, do you wish to have this nur? Do you wish to go into the ibadat? Do you wish to perform the ibadat? And if you don't, Imam said, happily you can get up and go. Your Imam will not be mad at you. हमने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि हमको इबादत करनी है और नूर को हासिल करना है, नूर के करीब जाना है, अपनी रूह को तरक्की देनी है. तो हम गे बेतुल ख्याल किए इसमें आजम बोल के लिए. वहां पर भी एक मर्तबा मौला ने हमको चांस दिया कि इवन नाउ इफ यू डोंट थिंक दिस इज फॉर यू, आप आराम से उठ के जा सकते हैं, मौला आपसे नाराज नहीं होगा. पर हमने कहा, we said, no मौला, we are here because we want to perform ibadat. We want to come near your nur. We want to enlighten our soul. Then Imam gave you this May Azam. Because it was not compulsory. Because those souls who do not want to enlighten themselves, wanted to elevate their soul, who do not want to go near the Imam, then is no force. And you can see, and this is really amazing, that on Chandra there is not a single space to sit inside the Jamaat Khana. But in the morning, you have nothing but the space, empty Jamaat Khana. That shows how many people are willing
and happily wants to come near the Noor. कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें नूर चाहिए, नूर की कुर्बत चाहिए, नूर के साथ अपनी रूह को बुलंद करना चाहते हैं. We don't even have to count. We know, I mean, just compare Chandrat and compare Betul Khayal. That tells you handful of people. 1 out of 100 or not even 100. अगर शाम को 5,000 लोग हैं तो सुबह को 50 लोग नहीं होते हैं. That shows is not even 1 out of 100 that wants to come near the Noor of the Imam or to elevate their soul. Not very many, right? So we are those fortunate one. मेरे ख्याल में हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्होंने हिम्मत करके इमाम के पास जाकर इसमें आजम लिया है, इमाम से दुआ आशीष ली हुई है. Let's fulfill our promise to the Imam. Be regular in the practice of bandagi. If you cannot go to Jamaat Khana, still wake up early in the morning, like 3 o'clock, 3:30, as early as possible. Do some tasbih, Giriya do some sajda, sit in ibadat, fulfill your promise to the Imam. Because we had said, Ya Mola Bapa, if you bless us with this Isme Azam, I will practice bandagi regularly. That was our promise, right? With the Imam. Mola has blessed us with this. Let's remember. And yeah, I agree. Imam agrees with you. It is difficult. It is difficult. But it's doable. It is very much doable. Matter of fact, many have taken this Isme Azam and have gone ahead further, closer to the Noor of Imam. If they can do it, you and I can do it too. अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. उनके सर पर कोई सींग थोड़ी निकले हुए हैं और उनके बाजुओं में कोई पर नहीं लगे हुए थे. वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे. You know, Imam says, look at Pir Sadaddin. He was just a human like you with 2 hands and 2 feet. He was no different than you and me. Then how did he do it? एक चीज से, हिम्मत. हिम्मत. अब हिम्मत रखें, हम भी वही काम कर सकते हैं जो पीर सदुद्दीन ने किया है, जो हमारे भगतों ने किया है. We can do it. You and I, we can do it. Yes. If it is difficult, remember it is difficult for everybody. And if it were easy, it wouldn't be far, it would not be for each individual to make this choice. अगर ये आसान होता तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी ना. सबको मिल जाता आसानी से. मतलब बोलते हैं कि अगर आसान होता तो फिर तो आपको इंडिविजुअली ये चॉइस करने की, ये ख्वाहिश करने की, ये मेहनत करने की, ये कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं थी. Yes, it is difficult. See, Mola understand your pain, but it is doable. It's doable. I mean, just imagine how many times do we make excuse
that I'm so busy I cannot go to work? How many times do you make excuse? I'm so tired I cannot eat. I'm so tired that I cannot brush my teeth and change my clothes. I'm not going to take a shower because I'm so busy. No, we don't make excuses. Just like that, ibadat has to be a priority. Ibadat has to be a priority. You know why? Because at the end, all the food, your work, your home, your family, anything and everything that you have done will not come with you. But your Isme Azam, your Ibadat, and the Nur which you had received from the Imam will come with you. That Nur and that bowl will be your friend, will guide you, will stay with you. Everything else, you're going to leave it right here. None of this will come with you. But your Isme Azam and the Nur which Imam have given to you will stay with you. Mullah says, you have made this choice. आपने खुद ने ये फैसला किया है. You have come to the Imam and said, we wish to be admitted to Baitul Khiyal. I entrust the ball to you. आप खुद आए हैं तो मौला फरमाते हैं कि मैं आप पर भरोसा करता हूं और आपको ये बोल इनायत करता हूं. आपके पास ये बोल जो है वो मेरी अमानत होगी. लिसन टू दिस नाउ. ये बोल जो है वो आपके पास मेरी अमानत होगी. जब आप उस दिन आएंगे ना मेरे पास तो ये बोल और ये नूर को वापस लेते आना. बिकॉज ये बोल और ये नूर आपके साथ रहने वाला है मेरी अमानत के तौर पर. इसको खो नहीं देना. ये बोल को भूल नहीं जाना. ये नूर को बुझा नहीं देना. Do not lose this ball. Do not forget this ball. Do not lose the noor I'm giving you today. It is trusted on you. अमानत के तौर पर दी है मैंने आपको. जब आप मेरे पास आए तो ये आपके पास मेरी अमानत होगी. इसको साथ में लेते आना. खो नहीं देना इसको. Don't lose it. Because it is something that has been trusted on you. And I give you special, special, special blessings for success. जब मौला ने ये ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मैं खास 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 दुआ आशीष फरमाता हूं फॉर सक्सेस इन योर बंदगी, तो फिर क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो गए? What can be the reason for us not being successful? It cannot be from the Mullah, because Mullah wish, he's blessed you with Isme Azam, he has given you his Khana Vadan, special blessing, and he wants you to be successful. Then there only can be one reason, and that is something in us. हमारी सुस्ती, हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारे excuses, it has to be something that we are not doing right. Otherwise, Imam truly wants you to have this Noor successfully. If he did not wanted it, he would have never given you this Azam.
So it is not him. We need to pay attention to ourselves. What are we doing that we are not being successful? Each one of us. Self-reflection is very, very important. I love this Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alayhi. May our soul be sacrificed to their Imam. That every night when you sleep, you ask yourself, what have I done for my soul today? आज मैंने अपनी रूह के लिए क्या किया? चेक करें अपने आप को रोजाना. Self reflection. This self reflection will tell you what are you not doing correctly. Once you figure that out, believe me, this path is easy as ABC. इतना मुश्किल भी नहीं है. पता है कैसे पता चला कितना मुश्किल नहीं है? क्योंकि हमारे दाइयों ने किया, हमारे भगतों ने किया, हमारे आरिफों ने किया, हमारे पीरों ने किया. वो भी हम जैसे ही इंसान थे. अगर उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर पर कोई सिंग नहीं थे और बाजुओं पर कोई पर नहीं थे. They were just like you and me. Inshallah, with the self-reflection, we can think, how can we be successful? Because Imam want us to be successful. And Imam says, and my prayers are with you. When you are in the bandagi, my prayers are with you. याद रखना कि जब आप इबादत में बैठेंगे तो इमाम की दुआ आशीष आपके साथ होगी, बल्कि इमाम अज खुद आपके साथ होंगे, बल्कि इमाम ने आपका हाथ पकड़ा हुआ होगा. Why would we want to sleep when Imam is holding our hand? He's standing right next to us. He's keeping his blessing on us. Why are we sleeping? ये तो गफलत हो गई. इमाम जाग रहा है, इमाम आपके पास आया हुआ है, इमाम आपके साथ खड़ा हुआ है, इमाम ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, इमाम की दुआ आशीष आपके ऊपर है, और हम गफलत की नींद सोए हुए हैं. No, it cannot be, right? So let's finish this. And my prayers are with you. You are in bandagi. When you are in bandagi, khana vadan, khana vadan, khana vadan. Mullah said, once again, I will repeat the bowl and just concentrate on this bowl, on the bowl. You have my best blessings, khana vadan. आप सिर्फ बोल के ऊपर तवज्जो दें, बाकी सबको छोड़ दें. अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी सबसे बेहतरीन दुआएं आपके साथ है, खाना बदान. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. So we will stop here. Inshallah, next time we can read other faramin. If you have any question, please do ask. Ji. Subhanallah, Subhanallah, sir. So we have received few questions in the chat. So the first question is it necessary to go to physical Jamaat Khana in the morning to do bandagi? It would be nice to do it, but if you can't, do not miss your ibadat. As I would like to always emphasize on this fact that we are Garib and Nachis, we are most imperfect humans. The reason for going to Jamaat Khana is in the hope and wish that there would be someone over there who is more successful in Ibadat and Isme Azam. And when Imam
is showering His blessing, His nur on him or her, we will also receive some water, some nur, some leftover, some blessing, because we are close to him. आप समझ गए ना? जमात खाने जाने का फायदा ये है कि जब हम जमात खाने जाते हैं तो ये उम्मीद करते हैं, इस बात को समझते हुए कि हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो हालत है, हमारी जो कमजोरियां हैं, वो उसको हम जानते हैं और उम्मीद है कि जमात खाने के अंदर एक ऐसा मोमिन शख्स बैठा होगा जिस पर इमाम अपनी नवाजिश, अपने इसमें आजम और अपने नूर की बारिश करता होगा और उस बारिश के छींटे, रहमत के छींटे हम गरीबों पर भी गिरेंगे. So it is much more beneficial in collective ibadat. But if you cannot go to Jamaat Khana, do not miss your morning ibadat. Do not miss your morning ibadat. Do not miss your morning ibadat. Ji. So another question. Imam says in his Farman, he will be happy to give another bowl once one is successful. But you said one should go for the blessing every time Imam comes to give bowl. Does this Yes. mean doesn't have to be successful with the first bowl before going for the second? Very good question. I was hoping someone will pay attention to that and ask. बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई इस पर तवज्जो देकर ये सवाल पूछेगा. We have to take Imam's Farman as a combined. And if you remember, just as I was reading that, I quoted another Farman with that. So when Imam is speaking to the audience sitting in the Baitul Qiyam, let's say 2,000 people are sitting there. Imam is speaking to everyone, right? There would be Garib like me. There would be weak like me. Kamzor hoge mere jaise. And there will be some successful like you. So Imam is speaking to all of us by saying, if you are successful, you come back. And you, if you are not successful, you come back too. Because I'm here to bless you. ऐसा नहीं है कि खाली पैसे वालों के लिए कुछ होगा और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होगा. That's not Rahman and Rahim. आपने देखा? Wisdomful language. Now let me give you another example. When Imam comes to the normal darbar for the Jamaat, and when he says, my spiritual children, I mean, think about 35, 40, 50, 60,000 Jamaat is sitting there. There will be a lot of us who don't even believe in Imam as Imam. A lot of us will be there who just see him as a body, a human like you and me. They will do not see him as a spiritual father. But Imam says, my spiritual children to all of them. यहाँ पर भी same है. Same applies. He puts all of us in the same basket and says, if you are successful, you come to me. If you are not successful, you come to me. I'm here. I'm your spiritual father. I'm here to guide you. I want you to be successful. Otherwise, that would be really strange that because you are successful, he's giving you more and more and more. When you don't even need it, you're already successful. And I, who's not successful, I need more so I can be successful. जो पैसे वाला है उसको पैसे देने में क्या फायदा? जो गरीब है उसको खाने की जरूरत है. You see?
विजडमफुल लैंग्वेज। इमाम की लैंग्वेज जो है वो हर एक नहीं समझता है। जी, thank you for asking this question. I was really hoping that someone is paying attention to that. जी, That's another question. Are we seeking our soul through remembrance of both, or are we seeking Nur? Because Maulana Sultan Muhammad Shah in his Farman said that take your soul out once. So, what is the connection of seeking Nur and taking the soul out? another good question. Different stages. इबादत में अलैदा अलैदा stages हैं. Initial stage, that your Isme Azam is automatic. Now you remember, now you are enjoying your Isme Azam. Very first stage, happiness, spark of the light, didar, more nur, more light. Taking out the soul out of the body is very far. It's not the first stage. It's not the first stage. Further down the road, somewhere, when you have perfected your soul, because it's not that you only have to take out your soul. If you are not successful, how are you going to bring your soul back? ऐसा नहीं है कि खाली आपको रूह निकालनी है, भाई रूह वापस भी तो लानी है. And therefore, you have to be perfect in your ibadat, in your bowl, in that practice, so you may one day can take your soul out and then bring it back. Stages, stages, baby steps, baby steps. So when Imam gives you Farman, he lumps sum all of the stages in one. Sometimes he talks about the happiness. Sometimes he talks about the spark. Sometimes he talks about the nur. Sometimes he says just come near the nur. Sometimes he talks about your soul, your remembrance. You see, all different stages of ibadat. Ji. Sir, another question. Only Bandagi time is enough, or our 23 hours also be a part of Bandagi to make concentration easily? Absolutely. Yes. Practice, practice, more practice. If you have listened to those lectures on Ibadat and Isme Azam, there is one thing this Garib and Nachis has emphasized on. Practice, practice, and practice your Isme Azam initially during daytime. Because in night time, there's a time of test. प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है रात को तो टेस्ट का वक्त आता है. प्रैक्टिस तो पहले होनी चाहिए ना. तैयारी कभी करेंगे हम एग्जाम के लिए, पहले करेंगे. Practice, practice, practice. Don't waste any time. Whatever time you have available, remember your bowl. While you are working, you can remember your bowl. While you are driving, going to work, while you are eating, practice, practice, and practice. G. Sir, friend is asking for more explanation on how to seek and how to find. Okay. So there are different understanding, and again, I would request you to listen to those dozen or so lectures on Isme Azam, Ibadat, and Bandagi. We are talking about three things: Isme Azam, Ibadat, and Bandagi. Listen to those lectures. Step by step have been explained what it means to seek Nur. But your question is really good and timely. This is a good time to ask this question. सबसे पहले, initially, you must know, because if you don't know, the seeking part does not come.
अगर आपको इस बात का पता ही नहीं है तो ढूंढने की बात नहीं हो रही है अब. You must know that Imam has given you the Noor with Isme Azam. What did I say? Imam have already given you the Noor with the Isme Azam. Is in you. Now he is asking you to seek that Noor which he has given to you. Seek that. Isme Azam is the name with which you can call your Noor. आपके नूर का जो नाम है ना वो आपका इसमें आजम है. But initially you must know that you have been given the नूर. पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको नूर दिया जा चुका है. वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है. अभी आपको ढूंढने की जरूरत है ना. Now knowing that you have a nur in you, now you are seeking that nur which is in you. And how do you do that? You call upon it with your Isme Azam. So he may reply back to you. Your Isme Azam, your Nur will reply back to you. Your Nur, your Isme Azam will speak to you. Your Nur, your Isme Azam will guide you. Your Nur, your Isme Azam will walk with you. Your Nur and your Isme Azam is alive in you. I will strongly urge you to listen to those lectures and you will see how clearly it has been told again and again how to be successful in ibadat. Believe me, it's not that hard. Each one of us can do it because Imam wants you to be successful. Imam wants you to be successful. Ji. So another question. Imam says, sit in bandagi with humbleness. Please explain a little bit more on it. Humility. You cannot demand humility and you cannot demand. You cannot say, because I'm sitting in ibadat, I have a right to the nur. Humility is a key to ibadat, meaning you must first declare yourself to be nothing. How do we do that? Verbally and by your thoughts. Verbally and by your thoughts. Verbally. How do we do it verbally? बोलने का भी है और सोचने का भी है, दोनों. बोलने का क्या है? बोला, I am nothing. I know I cannot do what you're asking me to do. I do not have that strength in me to come near your nur. I'm nothing. I'm here, but it is you who can make this happen, not me. I can do ibadat for 100 years and I know I do not have that in me to be successful. I'm nothing. I am the dust under the feet of the Mu'mineen. And you cannot just say these things. You have to believe these things. I'm nothing but the dust under the feet of the Mu'mineen. Let me ask you, my brother, my sister, if I ask you to kiss somebody's feet, will you be able to do it? If I ask you to kiss somebody's feet, will you be able to do it?
If your answer is no, you are not humble enough. You don't have the humility which is required to be successful in ibadat. You see how easy it is? Self reflection. आपने देखा ना, मुश्किल नहीं है. हम अपने आप को सवाल करें कि मैं सिर्फ बोलता हूं कि मैं हम्बल हूं कि मैं करके दिखा भी सकता हूं. Ask yourself right now, if you are told, you are asked to kiss someone's feet, will you be able to do it? आप बोलते हैं मैं तो किसी को सलाम भी नहीं करूं, मैं तो किसी के सामने. Sorry, we can't hear you. We can't Sir? hear you, sir. Sir, we cannot hear you, sir. We can't hear you, Sir, we sir. cannot. Sir, we cannot hear you. I have told him already. Please mute yourself. Thank you. Sir? Sir, we cannot hear you, sir. Kamania sir, can you mute everyone and then unmute, sir? I texted him already, so he should be checking his text. Just give me a minute. Hello, Yali. Yali Madad. We can't hear you. Yes, we know that. I have already texted sir. He's aware of it. He's trying to fix this mute issue from his side. Please keep your devices on mute. Thank you.
Friends, sorry to inform you that there's some issue internet on the server's side, so we have to end this session here. So inshallah, we will see you tomorrow. Thank you. Yali Madad. Yali Madad. Madad. Maula Ali Madad. Ya Ali Madad, sir.